Hmm. Good morning, everyone. Welcome back to our class at Chemistry is Life. Today we will be revising the concept of periodic table once again. Periodic table एक ऐसा टेबल है जिसमें all the elements which have similar properties have been grouped into one particular row or a column or a group as decided over time. आज जो हम टेबल देखते हैं अपने सामने उसमें हमें 118 एलिमेंट्स नोन है और इसको हम कहते हैं द लॉन्ग फॉर्म और द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि अगर हम किसी को मॉडर्न टेबल या लॉन्ग फॉर्म टेबल कह रहे हैं तो इससे पहले डेफिनेटली बहुत सारे रिसर्चर्स ने कोई ना कोई अप्रोच लगा के हमें एलिमेंट्स को ग्रुप करने के अलग अलग तरीके बता रखे होंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस बात को कि सबसे पहले आए डेबोनर। उनके अप्रोच को हमने बोला डेबोनर ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी या उनके जो रिसर्च वाइट पेपर उस टाइम में पब्लिश हुए थे उन चीज़ों के हिसाब से अगर हम सारे एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक उस टाइम के पीरियोडिक टेबल को ग्रुप करते तो वी वुड हैव फाउंड दैट the atomic weight of the middle element in the group was the arithmetic mean of the other two elements. For example, lithium, sodium और क्लोरीन। लिथियम और क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता उसका एवरेज एटॉमिक वेट होता सोडियम का। हाउएवर इन रियलिटी क्या हुआ, ये जो लॉजिक था कि द एटॉमिक वेट इज द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स इन द ट्राइड, ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप तक था। जैसे ही बात पहुंची आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन पे ये चीज़ काम नहीं किया क्योंकि ब्रोमीन जो है एज पर डेबोनियर फॉर्मूला उसका एटॉमिक वेट होने वाला तो होना चाहिए था 79, बट ब्रोमीन का जो वेट है वो है 85.5। तो यहाँ पे आके डेबोनियर ट्राइड फेल हो गए, उन्होंने कोई जस्टिफाई नहीं कर पाए। जब हमने ये फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साइंस स्टैब्लिश हो रहे थे तो दैट वाज द ड्यूरेशन व्हेन पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन ईच अदर्स रिसर्च। तो डेबोनियर के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिस्टर न्यूलैंड्स। मिस्टर न्यूलैंड्स ने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव करके लॉ हमें बताया जिसके हिसाब से एलिमेंट्स और द एटम्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड the physical and chemical properties of the first atom or the first element would be repeated in the eighth element. So since this was similar to the 8 notes of music, it was termed as law of octaves. Or rather, to be more clear, it was termed as the Newland's law of octaves. But again, there was a limitation to it. सोडियम जो है, सोडियम वहाँ पे मैच नहीं खा रहा था। उसके बाद आए लोथर मेयर। लोथर मेयर ने बोला कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, द केमिकल और द फिजिकल प्रॉपर्टीज वर आइडेंटिकल एट एवरी स्टेज। But even that did not work for us. Then comes the modern periodic law. Modern periodic law says that if atoms in the periodic table are arranged in the order of the increasing atomic number, then the physical and chemical properties would be same if arranged in one particular group or a column. There are 8 particular columns and 18 groups. The properties of all the groups and the columns would be same or periodic depending on if the elements were arranged in the order of the atomic number. So with this, since this was the most relevant and the most widely acceptable law for periodic table, it became started to be called as the modern law of periodic table or modern periodic table or the long form of periodic table. Now, there is a concept known as periodicity. Periodicity is something which states that if the elements are arranged in the order of the increasing atomic number, then the periodic properties, that is the physical and the chemical properties, are repeated at regular intervals. अगर same property ना भी हो तो they show a gradual, logical and a sequential change in their property. So this type of a change or a gradual change is known as periodicity and the change occurs in their physical and the chemical properties. अब हम एक टॉपिक पे और भी आ सकते हैं जिसका नाम है वैलेंसी।
वैलेंसी का मतलब ये हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल किस काबिल है हमारे पास कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। एक मेटल होगा, मेटल के पास ये टेंडेंसी होगी कि जितना जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर सके, उस सिचुएशन में हम मेटल को बोलेंगे कि दैट इज हाईली रिएक्टिव। उसको हम हाई केमिकल रिएक्टिविटी भी बोलेंगे। और ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, ये रो नंबर 1 and 2 में पाए जाते हैं, विच मीन्स कॉलम 1 and 2 हैव हाईली रिएक्टिव मेटल्स। Now, since we are talking about valency, so the metals have a tendency to lose electron as fast as possible. Similarly, non-metals have a tendency to gain electron as fast as the earliest as possible. Now, since these are in reference to the electrons, so the electrons are always lost from the outermost shell or the outermost orbit of the element or the electron. तो बेसिकली जो ऑर्बिट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सन जो है वो सेंटर ऑफ द ऑर्बिट पे है और अर्थ उसके चारों ओर चक्कर काटता है इन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक पाथ्स। सिमिलरली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एटम के न्यूक्लियस के आसपास या एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं इन सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक पाथ्स। The distance from the nucleus of an atom to the electron in the outermost orbit is known as the atomic radii. The more the radii, the lesser is the force of attraction between the nucleus and the electron. Going by this fact, what we can also see is the orbits or the energy levels. Orbit इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये concentric circular paths हैं और ये well defined path हैं, लेकिन they are not in the shape of a circle. बट जैसे मैंने बोला कि एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा उतना कम अट्रैक्शन होगा, तो जो ऑर्बिट एक्सटर्नल होता है जिसको हम पी शेल या पी ऑर्बिटल भी कहते हैं, उसका और न्यूक्लियस ऑफ द एटम का जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम होता है। सो एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट वैलेंसी जो है, वैलेंसी है मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल। Some elements like copper, argentinium and aluminium are those kind of elements which have been called to possess variable valency. Variable valency is termed so because these three major metals have a tendency to lose various electrons in various steps. What I mean by this is, इनका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में ये हो सकता है 2 को यूज करें, सेकेंड स्टेज में हो सकता है बाकी 2 को भी यूज करें। सो सच अ मेटल और अ नॉन मेटल विच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वेरिएबल वैलेंसीज। So now what we have understood so far is ionization energy is similar to variable valencies. Why I call ionization energy similar to variable valency is the fact because ionization energy or IE1 और I और first ionization energy जो होता है वो रेफर करता है इस बात को कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए to make the element lose the electrons. In this situation जो एनर्जी हम काउंटर करते हैं उसको इंटरनली हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। So ये हमारे थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अबाउट पीरियोडिक टेबल। काइंडली रिव्यू द चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस गेट बैक टू मी and also like and subscribe this channel. Apart from this topic, if any other topic is there which you want me to discuss with you, we can do that also. The next class would be on metallurgy and stoichiometry. Thank you.